reflection and transmission of wave. ठीक है, इसके बिना आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए अब ये बताना पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। तो सी देयर इज अ बाउंड्री, इस साइड एक मीडियम होता है और इस साइड दूसरा मीडियम होता है, मीडियम टू। कभी भी कोई वेव किसी भी बाउंड्री को हिट करता है तो बाउंड्री इज व्हाट, व्हिच सेपरेट्स टू मीडियम, राइट। ठीक है। तो कभी भी वेव किसी बाउंड्री को हिट करता है विद सम इंसिडेंट एनर्जी, सो couple of things can happen with it. Right. It can get reflected, it can get transmitted, fine, a part of it can even get absorbed. अच्छा, ये तो वैसे जो लाइट में होता है, हीट में सर। हाँ, incident is equal to reflected energy plus transmitted energy plus absorbed energy. Right. Suppose if I take there is no absorption, medium में कुछ भी loss नहीं हो रहा है, ठीक है, this is absorbed, this is transmitted, this is reflected, this is incident. Okay, Gurashish? तो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी होता है, फाइन। सो कभी भी किसी बाउंड्री पे एनर्जी आएगा, वेव आएगा, सो अ पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ इट विल गेट ट्रांसमिटेड, और दोनों का सम जो होगा टोटल एनर्जी होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एंटायर विल गेट रिफ्लेक्टेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एंटायर विल गेट ट्रांसमिटेड, फाइन। सो दैट these are the extreme, but this is the general case, right? इधर तक समझ में आया? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है, और यदि रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, उसे समझने के लिए आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ओके, ठीक है, कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। So do you have any idea what is rarer medium and what is denser medium? देखिए, रेयरर और डेंसर जो होता है प्रशित, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। टू मीडियम्स आर said to be rarer denser if speed of wave decreases when traveling from मीडियम 1, जिसे हम रेयरर कह देंगे, टू मीडियम 2, जिसे हम डेंसर कह देंगे। तो यदि एक वेव एक बाउंड्री पे आता है और क्रॉस करने पे उसका स्पीड कम हो जाता है, सो वी कॉल दैट एज रेयरर एंड डेंसर मीडियम, राइट, फाइन। टू मीडियम कैन बी रेयरर denser for a certain type of wave, for a certain type of wave, ठीक है। So I'll tell you an example. Suppose if I take light and sound, दो waves लेते हैं, medium ले लेते हैं air and water. So light is 3 into 10 to the power 8. Here the light is 2.25 लगभग into 10 to the power 8. So when for light this is rarer and this is denser, ठीक है। But if we talk about sound, sound is 330 meter per second in air. In water it is 1500 meter per second approximately. right. So for this becomes denser, this becomes rarer. Understood? Okay.